Krishna 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 Hare Krishna 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 Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Krishna Keshava Krishna Keshava Parima Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Parima Hare
Hare Hare Sri Simadhi Tabanki Sri Boy Sharanarvin Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Skandaviti Foundation Divine Grace Sri Prabhupada ki Namacharya Sri Haridas Thakur ki Samaveta Bhakti Vrinda ki Harinam Sankirtan ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jainita Gaur Vimananda. All glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to be assembled devotees, all glorious to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glorious to Sri Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Asrabhyaya Namaha. 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 Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Yad kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. I was looking for that. You should take a picture from the front and the back, both. Yeah. Who is translating? Yes. Some asana can be here, and you should sit here actually and face. Find something, some straw mat, something. You want to translate? Someone wants to translate. You will translate. Okay. Like someone wants to. Yes. Yeah. Yes. Where is our Mukunda Padma Prabhu? He left. He abandoned us. He arranged for this get together and he left us. This is supposed to be like brahmachari kind of get together. Well, majority here are brahmacharis. The very word brahmachari, I'd like to request everyone to close their cell phones. Yeah, put your cell phone on silent mode, just like when you take a flight. Probably most people don't take flights, yeah. Brahmacharya, life is in many ways the basis. That's where proper knowledge and understanding begins in our Vedic culture. Yeah. जो ब्रह्मचारी पद्धति है जीवन जीने का, वो अपने अध्यात्म को धारण करने के लिए, अध्यात्म पालन करने के लिए आधार है, मतलब सबसे मूल आधार ब्रह्मचारी जीवन शैली. Yes, we cannot speak about Vedic culture without brahmacharya life. Yeah. जो वैदिक धर्म है, वैदिक हम जो कल्चर फॉलो करते हैं, बिना ब्रह्मचारी जीवन के उसका कोई अर्थ नहीं है. Srila Narada Muni, in the 7th canto of the Bhagavatam, chapter 11, he gives a list of 30 qualities needed when we attain this human form of life. श्रीला नारद मुनि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 11वें चैप्टर में 11वें अध्याय में ब्रह्मचारी के 30 क्वालिटीज, 30 जो उनके क्वालिटीज हैं उसका वर्णन करते हैं. Yes, if one does not develop these 30 qualities, one is not considered to be civilized human being. अगर ये 30 क्वालिटी हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते, हम उसका पालन नहीं कर पाते, तो वो जो है एक मनुष्य योग्य कहने योग्य रहता. Arya. Arya is like advanced. So like, yeah. And one of those 30 qualities is brahmacharya life, brahmachari training. Yeah. उन 30 क्वालिटी में से एक क्वालिटी ब्रह्मचारी जीवन है. Yes. And that is why in the Vedic system, Gurukul training is there to help one practice brahmachari life. इसलिए वैदिक जो हमारे शिक्षण पद्धति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम का जो ट्रेनिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण है. Yes. Not everyone
in the Vedic culture, in the Vedic system, not everyone actually goes to Gurukul. जो वैदिक जीवन शैली उसमें भी हर कोई गुरुकुल में शिक्षा धारण नहीं कर सकता है, नहीं करता है, कर पाता है. The members in society who actually go to Gurukul they're basically those who are more like Brahmanically, either Brahmana, Kshatriya, they go to Gurukul. तो हमारे समाज में जो गुरुकुल में जाने के इच्छुक होते हैं तो अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो ब्राह्मणत्व का गुण होता है उनके अंदर या क्षत्रिय गुण होता है, तो अधिकतर ऐसे लोग गुरुकुल जाते हैं. So a small question, especially for our Gurukul boys, which also can be there for the older brahmacharis. Yeah. In addition to Gurukul education, what is the most, we could say, most popular and important type of education in Vedic culture? तो हमारे जो वैदिक पद्धति है उसमें गुरुकुल ट्रेनिंग के अलावा ऐसा क्या और इम्पोर्टेंट शिक्षा है जो हम धारण करते हैं? Yeah, Gurukul. When we speak about Vedic education, naturally, the term or the system Gurukul comes to mind. जब वैदिक शिक्षा की बात होती है तो तुरंत हमारे दिमाग में गुरुकुल पद्धति ही आती है. But there's another form of education which is less known in modern day society. एक और पद्धति है, शिक्षा पद्धति है जो आज के समाज में उसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं. And that other type of education is for all those, the majority, the vast majority of those who don't go to Gurukul, that other type of education is for them. तो जो अधिकतर लोग जो गुरुकुल नहीं जाते या नहीं जाना चाहते या जा नहीं पाते, उनके लिए वो जो दूसरी पद्धति है ये ज़्यादातर प्रचलित है. So that is my question. तो ये पद्धति कौन सी है, ये प्रश्न है. हाँ, कौन की है? What is that? Others, yeah? Anyone from Gurukul? No? You have to raise your hand so we can see. At least your finger, one finger. Yes? The school, academic schools. Academic school. No, actually, Gurukul is academic school. Gurukul is academic school, but there's another type of non-academic school, that's what I'm asking, which is for the majority of young boys, because majority of young boys will not become brahmanas. Yeah. You have to translate that now. तो जो ये दूसरी पद्धति है, ये कौन सी पद्धति है जो उन लोगों के लिए है जो अधिकतर गुरुकुल नहीं जाते हैं, तो ये बहुत प्रचलित है. ऐसा कौन सी पद्धति? In modern day society, these two traditional system of Vedic education, Vedic education means two very specific system. Both are missing in modern day society. तो आज के समाज में ये दोनों पारंपरिक शिक्षाएं जो हैं, शिक्षा पद्धति जो है गुरुकुल और जो दूसरी शिक्षा पद्धति, ये दोनों मिसिंग है आज के समाज में. And because they are missing, therefore we are not training young boys in brahmacharya life. तो क्योंकि ये आज के समाज में प्रचलित नहीं है या पालन नहीं हो पा रहे, इसलिए हम जो ब्रह्मचारी आश्रम है इसको हम सही तरीके से उत्पन्न नहीं कर पा रहे. What is meaning of brahmacharya life? ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? From our younger brahmacharis, then we'll jump over to our older brahmacharis. Renunciation. Renunciation. Tyag. Renunciation of what? Renunciation of the money and money, family and family Renunciation of money and family. and family. Oh.
Yeah, renunciation actually is, it is, it is one of the important qualities that one should develop as brahmachari, especially brahmachari life, yeah. जो त्याग है, जो अभी उत्तर में प्रभु जी ने बोला कि एक जो है त्याग है, वैराग्य है, बेसिकली रिनंसिएशन है, वैराग्य है। तो वैराग्य जो है ये एक बस एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी, ऐसे दूसरी क्वालिटीज नहीं है। Yes. ब्रह्मचारी आश्रम। Any other ब्रह्मचारी quality? Any other quality? Brahmachari. Remaining celibate. Uh-huh. Celibacy. Remaining celibate. Celibacy. आश्रम। Celibacy। Yes. Celibacy is one of the foremost qualities of brahmachari life. Yeah. तो जो स्त्री संग है, गर्लफ्रेंड नहीं रखना है, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रह्मचारी का। Yes. That's a big topic actually in itself. Very big topic actually. Another important quality for brahmachari, discipline. Discipline. What is discipline? अनुशासन। Anushasan, yes. So, these qualities one develops in Gurukul, but I want to come to the other kind of education, because even if somebody is in Gurukul, he should know that there's another system of education which is missing in today's world actually. तो प्रश्न यही है कि ये सारा पद्धति गुरुकुल के पद्धति में आता है, एक और पद्धति है, वो पद्धति कौन सी है? Yes. The family vritti. Family vritti. Tradition coming from family. Traditional work which is coming for non-Gurukul. Tradition coming from family. Yeah, for example, a carpenter or a mason teaching his children. A trade coming from family. Yes. Trade or skill. Occupation coming from Occupation. Yes. Yes. Correct. It's like yes, those who don't go to Gurukul, they will take up some kind of training, some kind of trade, some kind of skill. Correct. तो जो गुरुकुल नहीं जा पाते, वो अपने जैसे प्रभु जी ने बताया, अपने माता पिता से, अपने चित परिचित से, फैमिली से, जो है ना, परिवार से कुछ ट्रेनिंग मिलता है उनको, कुछ चीज़ सीखते हैं, वो दूसरी पद्धति। Yeah. For example, if one's father is a carpenter, then the young boy will assist his father, and in this way he will learn carpentry. जैसे कोई फैमिली जो है, कोई परिवार में अच्छा कारपेंटर है, किसी के पापा कारपेंटर हैं, तो जब वो बच्चा पापा को हेल्प करते करते वो चीज़ सीख जाता है। Or father knows about cloth making or pottery, he will by association, by observation will learn. So that's another kind of education. जैसे कपड़े बनाना, जैसे कुम्हार है, तो उसकी फैमिली अपने आप ऑटोमेटिकली सीख जाती इस तरह से। And what is the foremost of all, like within this category of non-academic education, in other words, to learn to become a carpenter, you don't have to go to school. You don't have to go to a building that's called a school, right? तो ये चीज़ सीखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए आप जाते हैं, वैसे ये कहीं जाना नहीं पड़ता, आप जहाँ पर हैं वहीं पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। So my question is, what is the foremost, what is the most important of all the different activities that young boys in the Vedic culture are meant to learn? तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो वैदिक परंपरा में गुरुकुल के अलावा सीखा जाता था? Any hands up? Not many hands up. Okay, the older generation, older Gurukul, I mean brahmacharis,
The brahmachari class, right? What is meant to be, see, Gurukul is called formal education. I don't know how you translate formal. प्रामाणिक जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल होता है. So there is formal, and the opposite is non-formal education. Kind of. It's non-academic, Yeah. non-formal. Yeah. So it's very important to understand, because that is actually the basis of our Vedic culture. तो ये दोनों पद्धति मिलाकर वैदिक परंपरा जो शिक्षा पद्धति थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये दोनों पद्धतियाँ मिलाकर. So what does Krishna and Balaram do every day in Vrindavan? कृष्ण और बलराम वृंदावन में हर रोज क्या करते थे? I've already given the answer. Now more hands are up. Yes. Huh? They sleep under trees. No. What do they do? Bolo. गाय और क्या बछड़ों को चराते हैं. They herd cows and Yes. Yes, Krishna and Balaram and so many of their cowherd friends every single day. तो रोज वो गायों को, गौमाता को और बछड़ों को लेके जाते थे चराने के लिए. Including Saturday and Sunday. हाँ, तो उनको कोई छुट्टी नहीं थी. शनिवार और रविवार भी वो जाया करते थे. Yeah, every day they take up. This is the main activity actually of the residents of Vrindavan. That is Krishi Goraksha. Krishi Goraksha. ये मुख्यतः जो एंगेजमेंट था वृंदावन के वासियों का, ये मुख्यतः वो यही करते थे. So that is why we are here. Today we are here in, you call it Nilachal Eco Village, is it? Vedic, okay. Vedic village, which is an eco village. इसी तरह जो हम जिस स्थान पे अभी बैठे हैं, इस स्थान पे भी मुख्यतः यही सारी एक्टिविटीज होती. We are meant to learn this type of these two types of education actually. तो हमको ये दोनों एजुकेशन सीखना चाहिए. We are meant to imitate or to follow the lifestyle of the residents of Vrindavan. हमको जो वृंदावन वासी हैं उनकी जो जीवन शैली उसका अनुसरण करना चाहिए. Unfortunately, in modern day society, we are very far removed, far distant from that lifestyle. तो अभी आज के समाज में, आज जो मॉडर्न सिटी जो लाइफ है जहाँ से आप लोग आए हैं, वहाँ पर ये सारा एक्टिविटीज़ क्या है, खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट निकल गया है. This means that actually the majority of young boys, I don't know if I should say this directly, but I mean that's the reality. Majority of young boys in the Vedic culture don't go to school. I hope this is not too shocking for anyone. तो अधिकतर जो लोग थे वैदिक परंपरा में, वो ऐसे कोई स्कूल नहीं जाया करते थे. Hari Bol! हरि बोल. Don't attend formal school. तो जो स्कूल की शिक्षा है वो अटेंड नहीं करना. Only those who have a desire to study. Mean generally, like Brahmanas, they have a natural desire and inclination and also ability. You see, we do what we like to do, you know. But not everyone likes to study, because not everyone is meant to study like a Brahmana, because majority of people are simply not Brahmanas. तो अधिकतर लोग जो हैं, जो जिनको विविध प्रकार का ज्ञान एकत्रित करना है, वही लोग हैं जो तरह तरह के विद्यालय, तरह तरह के जो है पढ़ाई के जो स्कूल है अभी जैसे आज के समय में यहाँ जाते, क्योंकि वैसे लोग जो है जो ब्राह्मणत्व है ये गुण उनके अंदर होता है, ऐसे लोग स्कूल जाया करते हैं या गुरुकुल जाते हैं. So that doesn't mean
It doesn't mean that those who don't go to Gurukul don't receive education. They receive a different type of education. जो लोग गुरुकुल नहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो उनको कुछ आता नहीं, वो सीख नहीं पाते, वो किसी और तरीके का ज्ञान उत्पन्न करते हैं. Yeah. They also, because of the culture, because of many daily activities in villages, traditionally, they learn so many things about Shastra simply by hearing. Yeah. तो श्रवण मात्र से ही ऐसे जो लोग गुरुकुल नहीं जाते, ये सिर्फ श्रवण मात्र से घर में रह के अपने बड़ों से, अपने चित परिचित माता पिता से सुनकर एक प्रकार का जो ज्ञान है वो सीखते थे. Yeah. In the Vedic culture, actually, majority of people, they learn by hearing. They learn by hearing and they learn by seeing, observing. Yeah. तो दो प्रकार से ऐसे लोग जो है ज्ञान एकत्रित करते थे, एक थे श्रवण से और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से देखकर एकत्रित करते थे. Yeah. So we were discussing a little earlier how in the Gurukulas that we are establishing, that we need to establish more and more, there is a need to gradually understand and identify the nature of each voice. Yeah. तो गुरुकुल में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमको जो गुरुकुल छात्र है उसका जो गुण है और जो उसका बिहेवियर है इसको पहचानने आना चाहिए. ये गुरुकुल का मुख्यतः कारण है. Yeah, which means, Srila Prabhupada explains, we need to develop our educational system either Gurukula or Varnashram college in keeping with different curriculum. Curriculum means different subject matters that will be either for Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra. Yeah. तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको गुरुकुल में ऐसा जो हमारा शिक्षा का जो सिलेबस है वो इस तरह होना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्णों का जो ज्ञान है इस सारे ज्ञान को पढ़ाना चाहिए. In one sense, actually, there is no difference between Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, because in what we call Daiva, what is the meaning of Daiva Varnashram? Let's ask this question. Daiva, who knows what is Daiva Varnashram? दैवी वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? Either from the younger generation or the older folks in the back there. What is Daiva Varnashrama? What is Varnashrama? And then what is Daiva Varnashrama? वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? हाँ बताइए. जिसके अंदर बहुत सारे वर्ण आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. और आश्रम, ये तो वर्ण हो गए. तो वर्ण और आश्रम है, तो आश्रम कितने हैं? आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम. Okay. So it's the Varnashram means these four Varnas and four, yes. And what is Daiva Varnashrama? अब दैव वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? Anyone? Yes. Varnashram system where the center is Krishna or Vishnu. Yes. It is the same natural division of Varna and Ashrama, but everyone is focused on practicing bhakti. तो दैवी वर्णाश्रम का अर्थ है कि वही चार वर्ण और चार आश्रम होंगे, बट जो केंद्र है वो भगवान श्री कृष्ण होंगे. Yes. Prabhupada also calls it Varnashrama as divine culture. Divine culture. ये जो वर्णाश्रम है प्रभुपाद जी इसको जो है एक दिव्य संस्कृति बोला करते हैं. Yes. So that is missing in modern day society, and Srila Prabhupada, he wanted that we slowly, gradually introduce this divine culture. प्रभुपाद जी की ये बहुत इच्छा थी कि यही दैवी वर्णाश्रम जो है ये हमको स्थापित करना है.
And this divine culture of Daiva Varnashrama will gradually help us in our practice of bhakti. तो जो हम भक्ति करेंगे, हम सेवा कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है ये इसमें बहुत ही हेल्प करेगा हमको। And where is the easiest place? Where is the most ideal place to practice Daiva Varnashrama? और ये दैवी वर्णाश्रम पालन करने के लिए सबसे अच्छी जगह कहाँ क्या है? Yes, गुरुकुला। Gurukula. Not the answer I'm looking for. association of devotees. Association of devotees. Gurukula is good, association is also good, but not the answer I'm looking for. Backside? farm side. Huh? Farms. Farm. Sustainable. Cows. Villages. Yes, that word actually important. Village. The Vedic culture, we can more easily and more fully introduce this Varnashrama lifestyle in village. जो वैदिक संस्कृति है इसका पालन बहुत अच्छे तरीके से गांव में हो सकता है। Yes, that is why villages are extremely important. इसलिए गांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because it is only in the country, it is only in the village that we can grow food, sufficient food to feed the whole population. गांव ही ऐसी जगह है जहां पर हम खेती कर सकते हैं और अन्न उत्पन्न कर सकते हैं सभी लोग। Where do we plow the land? In the city of Mumbai. There's no place to plow the land. तो मुंबई जैसे शहर में हम खेती कर सकते हैं क्या? Yeah. We don't want to pick on Mumbai. All cities, all big cities, they're making roads every day, more and more roads covering the land. You know, on the one hand, people are need more food. Population is increasing, and we're covering the land more and more, so that nothing will grow. तो शहर के लोग इस प्रकार हैं कि उनको खाने के लिए अन्न चाहिए, पर वो खेती नहीं करते। वो क्या करते हैं? सब जगह रोड, सीमेंट का रोड, सीमेंट की बिल्डिंगें, ये सब बना देते हैं। Can you grow food on cement, on road? No. Yes. And now also in modern village, they want the bus to come inside, so they also covering more and more of their land with modern road. So that means the more we cover our land with road, we have less land for growing food. Yeah. तो जिस तरह हम शहर में रोड बनाते हैं, इस तरह हम गांव में भी अगर पक्की सड़क, सीमेंट, रोड और बिल्डिंग बनाने लगे तो क्या होगा? उससे हम अन्न उत्पन्न करने का जो जमीन है हमारे पास वो कम हो जाएगा। Yes. What is the safest means of transportation? सबसे सेफ ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर है? Bullock. Yes. Bullock cart is the more simple, safest, and the most economical system of transportation. So we can keep a little. What time is it? I don't have a clock. 6:49. 6:49. 6:49. Yeah. We have maybe 5-10 minutes for any questions or comments on our subject matter. Yes. One devotee had asked me, we were discussing about More loudly. One devotee had asked. we were discussing about the Varnashram. Yes. So he asked me that if all the people will settle in the villages, Yes. so what will happen to the cities and what will happen to the temples in the cities, and who will give donation to the temples? So, Okay. Yes, you can translate that question. प्रश्न ये है कि